Prabhupada said, only by hearing from Krishna. प्रभुपाद कहते हैं केवल कृष्णा से श्रवण करके। What kind of hearing? किस तरह का श्रवण? Apparently hearing? अपार विचार से Or श्रवण with करना? divine senses hearing? या दिव्य इंद्रियों से श्रवण करना? So what is Prabhupada saying? Therefore, only by hearing from Krishna, तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं केवल कृष्णा से श्रवण करके, or from Krishna through pure via medium, bona fide guru, या फिर कृष्णा के शुद्ध माध्यम गुरु से श्रवण करना, can one understand the science of Krishna. कोई ये कृष्णा के विज्ञान को समझ सकता है। So what is the quality of our hearing? तो हमारे श्रवण की क्या गुणवत्ता है? Internally भीतर से and और externally बाहर से will influence what we can understand and what we don't understand. वो प्रभावित करेगा हम क्या समझ पाएंगे और क्या नहीं समझ Whether पाएंगे। we can get freed from mental speculation and a theoretical understanding कि हम मनोधर्म से मौखिक समझ से मुक्त हो पाएंगे या नहीं, and develop tattva vijnanam or practically realized knowledge, that is considered scientific. या तत्व विज्ञान हम पा पाएंगे जो कि असल विज्ञान माना So जाता है। jnana means theoretical, तो ज्ञान होता है मौखिक vijnanam means scientific. और विज्ञान का मतलब व्यवहारिक अनुभव। So can you be a guru without having vijnanam? तो क्या आप एक गुरु बन सकते हैं बिना विज्ञान पाए? Without Krishna practically revealing himself to you? कृष्ण ने व्यवहारिक रूप से आपको प्रकाशित नहीं किया आपके सामने। And then if you can't even get yourself to get Krishna to do that for you, how are you going to get Krishna to do that for anybody else? तो अगर आप स्वयं के लिए ये नहीं कर पा रहे हैं कि कृष्ण आपके सामने स्वयं को प्रकाशित करे, तो किसी और के सामने कैसे आप प्रकाशित करवाएं? I'm going to help you to realize how Krishna will reveal himself to you. I mean, he's not revealing himself to me, but I'm going to get him to reveal himself to you. तो कह रहे हैं मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे आप कृष्णा का साक्षात्कार पाएंगे, कृष्णा स्वयं को आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। मैं खुद के लिए ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन I आपकी haven't मदद figured करूंगा out how to get over my theoretical understanding, but I'm going to help you to get over your theoretical understanding. मुझे खुद ही अभी समझ में नहीं आया कैसे मैं अपने मौखिक ज्ञान से बाहर निकल सकता हूँ, उसे जैसे कैसे ज्यादा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं Well, आपको wouldn't मदद you करूंगा। just do it for yourself? अगर आप कर सकते हैं तो खुद के लिए क्यों And नहीं कर wouldn't पा you रहे get a practical realization and faith from that experience? और क्या आप स्वयं व्यवहारिक अनुभव और साक्षात्कार नहीं पाएंगे उसको करके? And isn't that what you're supposed to express? और क्या आप यही व्यक्त करेंगे With realization, पूरे साक्षात्कार के साथ, not theoretically? मौखिक तरीके से नहीं? There's not a theoretical presentation. ये कोई मौखिक प्रस्तुति Now, नहीं how are है, you going to know लेकिन आप कैसे समझ पाएंगे whether someone's speaking theoretically or practically realized? कोई अगर मौखिक तरीके से बोल रहा है या किसने साक्षात्कार Does he किया है have उसका? jnana or is it tattva उसके vigyan? पास ज्ञान है या उसके पास तत्व विज्ञान So है? if you're a conditioned soul, तो अगर आप बद्ध under जीव हैं, modes of material nature, प्रकृति के गुणों के अधीन prone हैं, to mental मनोधर्म speculation, करने की आदत लगी over है dependence on imperfect mind and और senses, जरूरत से ज्यादा निर्भर होने अपने With अपूर्ण cheating मन इंद्रियों के propensity, ऊपर और ठगने की बुरी आदत है with not good sumedhasaha, और अच्छी सुमेधसा नहीं है, then how are you going to understand it? तो कैसे आप इस सबको समझ पाएंगे? So let's read further. तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। I didn't see you this morning, so I could practice, get ready for this conversation tonight. आज सुबह मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया, तो मैंने I आज hope रात you के have लिए सारा patience with चर्चा me. तैयार की। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे We're साथ धैर्य बना quoting the पाएंगे। law books. हम कानून की किताबों से बातें कर रहे हैं, We're quoting the law books. हम कानून की किताबों से बात कर रहे हैं। Prabhupada is speaking in Bombay, December 20, 1975. प्रभुपाद बॉम्बे में बता रहे हैं 20 दिसंबर 1975 में, And he's speaking on this particular verse और that वो we're इस talking श्लोक about. पर ही बात कर रहे हैं। And when I was reading this description from Srila Prabhupada, that's what made me go back to this verse 7:1. तो जब मैं श्रील प्रभुपाद का विवरण पढ़ रहा था इस श्लोक के बारे में, तो वो फिर मैं वापस इस श्लोक पर आया। Even Prabhupada saying, everyone is trying. प्रभुपाद कह रहे हैं सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, I'm trying. मैं प्रयास कर रहा हूँ। Prabhupada says, not everyone. प्रभुपाद कह रहे हैं सभी नहीं कर रहे हैं। At the present moment, practically nobody wants to understand what is God. वर्तमान में कोई भी ये नहीं समझना चाहता कि क्या है भगवान। Everyone is busy to fulfill the desires and necessities of the material body. सभी कोई व्यस्त हैं अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने में, Selfish and extended selfish material desires. स्वार्थ या विस्तृत स्वार्थ की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में।
related to the body, bodily जो relationships. शरीर और शरीर के संबंधों पे आधारित हैं. Prabhupada says, as long as we are attached to this body and bodily relations, it is not possible to understand what is spiritual life. जब तक हम अपने इस शरीर से और शरीर के संबंधों के प्रति आसक्त रहेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ नहीं सकते हैं. Oh, just one thing in this. In this verse that we had just read, तो जो श्लोक हमने अभी पढ़ा, in those verses from Srimad Bhagavatam, और इन श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में it says Bhagavat Bhakti Yogata Bhagavat Tattva Vijnanam. So that it's talking about that level of Bhagavat Tattva Vijnanam, तो उस स्तर के भगवत तत्व विज्ञानम की बात हो रही है यहाँ, not theoretical. मौखिक नहीं. I just remembered that point. Sorry about that. मुझे ये बस बात अभी याद आई, इसके लिए क्षमा कीजिएगा. So as long as we're attached to the body, bodily relations, तो जब तक हम शरीर के under संबंधों modes के of प्रति आसक्त material रहेंगे, nature, भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन, it is not possible to understand what is spiritual life. आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ पाना आसान नहीं होगा. If one continues to be attached to this material body, और अगर कोई अपनी आसक्ति बनाना जारी And रखता है bodily शरीर से, relations, शरीर के संबंधों के प्रति, he is no better than Gokara, cows and asses, animals. तो वो गाय और गधे के समान है, So पशु if के we जैसा. continue on a modes of material nature to be attached to this body, bodily conception, bodily relations, then we are no better than cows and asses, animals. तो अगर हम शारीरिक स्तर के जीवन में शरीर से आसक्त हैं, शरीर के संबंधों के प्रति आसक्त हैं, तो हम गाय या गधे के जैसे या पशु के जैसे हैं. Therefore, we have no ability to understand or come to the platform of real spiritual life. इसलिए हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम असल आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ So पाएं. Vedic culture means human culture, not animal तो culture. वैदिक संस्कृति का मतलब है मनुष्य की संस्कृति, पशु की संस्कृति नहीं. Animal culture means to just satisfy the needs and the demands of your body and the needs and demands of your bodily relations. पशु संस्कृति का अर्थ है केवल शरीर के जरूरत और उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना और अपने शरीर भौतिक शरीर से संबंधित इच्छाओं और उनके मांगों को संतुष्ट करना. Prabhupada said in the beginning of Bhagavad Gita, one who's reading Bhagavad Gita, in India practically everyone reads Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद बता रहे हैं भारत में प्रायः सभी लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं. Of course, this is 1960s, 70s. और अवश्य 1960 और 70 के दशक की बात है ये. In India, practically everyone reads. भारत में व्यावहारिक रूप से सभी लोग पढ़ते हैं. But because one does not take the instructions of the Bhagavad Gita as instructed by Krishna, लेकिन कोई कृष्ण के निर्देश जैसे भगवद गीता में बताए गए हैं उनको उस तरीके से स्वीकार नहीं करता है, then one cannot take the benefit of the Bhagavad Gita's instructions. तो वो भगवद गीता के निर्देशों का लाभ नहीं उठा सकता So है. if we're only sentimentally or superficially hearing, we're not really hearing Bhagavad Gita. तो अगर कोई भाविकता रूप से बनावटी तरीके से भगवद गीता श्रवण कर रहा है तो असल में भगवद गीता श्रवण नहीं कर रहा Therefore, है. we cannot expect and take the benefits or the effects of the instruction of the Bhagavad Gita. इसलिए हम भगवद गीता के प्रभाव को या भगवद गीता के निर्देशों का लाभ नहीं उठा पाते हैं. The way to understand Bhagavad Gita, that's said in Bhagavad Gita itself. भगवद गीता को समझने की विधि भगवद गीता में ही बताई गई है. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upidekshantite jnanam jnanena stafadashina. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. सत्य को जानने का प्रयास करो प्रमाणिक गुरु के पास जाकर. Inquire from him submissively, render service unto him. उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो. It's not exactly properly translated. इसको सही तरीके से अनुवाद नहीं किया गया है.
Because it's saying if you want to understand Krishna in tattva, in truth, क्योंकि कहा जा रहा है अगर आप कृष्ण को तत्व में समझना चाहते हैं then you must surrender to Krishna and surrender to Krishna's representative bona fide guru. तो आपको अवश्य कृष्ण और उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु को शरणागत करना होगा And a humble state of mind, render service unto him. और विनम्र भाव से मनोभाव से उनकी सेवा करनी And होगी the first and most important service is to hear from him. और सबसे पहली और महत्वपूर्ण सेवा उनसे श्रवण करना है Then you have a right to make a submissive inquiry. तब आपके पास अधिकार है कि आप विनीत भाव से कोई जिज्ञासा कर सकते हैं उनसे Tattvadashina means one who understands and realizes the absolute truth. तत्वदर्शन का अर्थ होता है जो तत्व को समझता है और उसने उसका साक्षात्कार भी किया है If we don't have intelligence and faith from Krishna, how can we fully surrender and render this type of humble service if we do not have faith or intelligence that this person is a self-realized soul, tattvadashina? तो अगर हमें कृष्ण से ये बुद्धि ये श्रद्धा नहीं मिलेगी कि ये जीवात्मा तत्वदर्शी है तो कैसे हम उनको शरणागत करके विनम्र भाव से उनकी सेवा कर पाएंगे Now, I don't know if he's self-realized soul. मुझे पता नहीं इन्होंने आत्म I don't साक्षात्कार know किया if है he's नहीं। seen the truth. मुझे पता नहीं इन्होंने तत्व का दर्शन Right? किया How है या do I नहीं। know if he's seen the truth? मुझे He's कैसे- saying he's seen the truth. मुझे कैसे पता चले उन्होंने तत्व का दर्शन I किया वो hope कहते he's हैं seen उन्होंने the truth. तत्व का दर्शन That'd be किया मुझे nice. उम्मीद है कि उन्होंने तत्व दर्शन But किया can है I होगा say अच्छा with होगा no doubt लेकिन क्या मैं बिना that संदेह के he has कह seen and पाऊंगा understands the absolute truth? क्या इन्होंने परम सत्य को देखा है और समझा है That he's self-realized soul? कि ये आत्मा साक्षात्कार How are you प्राप्त going to व्यक्ति है। measure that? कैसे आप इसको How are you माप going to पाएंगे understand that? कैसे उसको समझ पाएंगे आप My Gurudev used to explain it that the three most important things you need to understand about the Guru, you have no ability to understand on your own. तो मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि गुरु के बारे में जो तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जानने की जरूरत है वो स्वयं की क्षमता से आप नहीं जान पाएंगे So how surrendered is this person to Krishna? इस व्यक्ति ने कितना शरणागत What किया is है his कृष्ण level को of surrender? उनके शरणागति का स्तर क्या है What is he surrendered? What is he prepared to surrender? वो क्या करने के लिए तैयार है शरणागति करके Can you measure that? क्या आप उसको आप माप सकते हैं How much faith does this person have in Krishna? इन व्यक्ति की कितनी श्रद्धा है कृष्ण में So can you measure that person's faith? तो क्या आप उस व्यक्ति की श्रद्धा को माप सकते हैं We're thinking we're faithful, we're sincere. हम सोच रहे हैं हम श्रद्धावान हैं So we're हम even एकनिष्ठ blind हैं। to our own level of faith, तो हम खुद ही अंधे हैं खुद की श्रद्धा के प्रति right? And then with that kind of contamination and influence of Maya, imperfect senses, now we're gonna extrapolate, or we're gonna use those same, pure transcendental divine intelligence and senses to analyze the faith of the spiritual master. तो अगर इस तरह के हमारे कलमस हैं और इस तरह के अपूर्ण इंद्रियां हैं इन सभी का इस्तेमाल करेंगे हम शुद्ध जो प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं उनको समझने के लिए उनको मापने के लिए And we need to know और लेकिन हमें how जानने की जरूरत surrendered है is this person, कि ये व्यक्ति कितना how faithful शरणागत is this है person, कितना श्रद्धावान है ये व्यक्ति right? And then the third point was, what is this person's real motivation और for तीसरी- doing what is he doing? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है वो करने के लिए जो ये कर Can रहे you हैं measure the person's motivation? तो क्या आप किसी व्यक्ति के उद्देश्य को माप सकते What's हैं his ultimate motivation for doing what he's doing? इनका अंतिम उद्देश्य क्या है वो करने के लिए So जो the वो कर things रहे that हैं you need to see, तो जो that चीजें you आप have to see, जो चीज आपको देखने की जरूरत है या आपको देखना ही we होगा have no ability to see. हमारे पास वो देखने की कोई योग्यता नहीं है Because that intelligence and that faith comes from Krishna. क्योंकि ये बुद्धि और ये श्रद्धा कृष्ण से आती But है we don't know Krishna. लेकिन हम कृष्ण We're को not जानते नहीं depending on Krishna. कृष्ण के ऊपर We निर्भर नहीं हो cannot रहे hear कृष्ण Krishna. को सुन नहीं सकते So where's the intelligence and faith going to come from? तो ये बुद्धि और श्रद्धा कहाँ से आएगी हमारे पास And without that intelligence and faith, how are you going to fully surrender? और बिना इस बुद्धि और श्रद्धा के कैसे आप पूर्ण शरणागत कर No, I'm पाएंगे fully surrendering. और मैं पूर्ण शरणागत कर रहा हूँ I am a soul surrendered unto you. मैं एक आत्मसमर्पित व्यक्ति हूँ Right? So without unflinching faith in Krishna and the Guru, you cannot fully surrender. तो And बिना neither अटूट- you should fully तो surrender. बिना अटूट श्रद्धा के कृष्ण में और गुरु में आप पूर्ण शरणागत नहीं कर पाएंगे और ना तो आपको पूर्ण शरणागति करनी चाहिए But that's required first. लेकिन ये पहली आवश्यकता है
then in a humble state of mind, hear from them. और विनम्र भाव से उनसे श्रवण कीजिए, Render service unto them. कुछ सेवा कीजिए उनकी। First most important service is to hear from them. सबसे पहली महत्वपूर्ण सेवा A है उनसे humble श्रवण state of करना, mind, submissive state of mind, विनम्र मनोभाव से, मानसिकता submissive से, all reception. विनीत भाव से श्रवण But if you have करना है। no intelligence and faith that you think that you can not think that you can be confident that you're hearing Krishna directly and through purifying medium of the Guru, then how you can surrender to the hearing process? तो अगर आपको ये पूर्ण बुद्धि या श्रद्धा नहीं मिल पा रही है कि यहाँ आप कृष्ण को सुन पा रहे हैं सीधे सीधे भीतर से या अपने गुरु के माध्यम से प्रकट होकर, तो कैसे वहाँ पे आप पूर्ण शरणागत कर पाएंगे? So I'll apparently surrender to him, तो हम बाहरी तरीके and से then I'll शरणागत कर रहे हैं apparently hear from him. और बाहरी तरीके से उनसे श्रवण कर रहे हैं, And then when I ask my question, I'll see if that answer makes sense to me. और जब मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा और उनका उत्तर हम देख पाएंगे कि वो मेरे लिए कोई अर्थ बनता है या That's नहीं। all apparent. It's not absolute. ये सब अपार है, ये So सब the तत्व whole नहीं है। thing is rooted in an illusion. तो सारी चीज का जड़ मोह से बनाया गया It's है, not rooted in the truth. It's not rooted in reality. तो इसका आधार सत्य नहीं है। So Prabhupada said, you should hear from Krishna and Krishna Parampara, प्रभुपाद बताते हैं आपको कृष्ण और कृष्ण परंपरा से श्रवण करना चाहिए right? And the Shastra. और शास्त्र से। That's the only thing that is to be heard. यही एकमात्र चीज सुनने की जरूरत And है, everything else but that और इसके अलावा जो भी चीज है is Maya. सभी माया है। So we're listening to everything else but that and have no ability to hear Krishna, Krishna Parampara or the Shastra. तो हम उसके अलावा सारी चीजों को सुन रहे हैं और हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कृष्ण कृष्ण परंपरा और शास्त्र को श्रवण करने की। But I'm fully surrendered. लेकिन हमने पूर्ण I'm शरणागत doing किया है submissive all और मैं reception. विनीत भाव से श्रवण कर I'm रहा हूँ, asking questions. मैं प्रश्न I'm पूछ रहा getting हूँ, answers. मुझे उत्तर भी मिल रहे हैं, Apparently. केवल बाहरी तरीके से। You think I wasn't ready for you tonight? आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए तैयार था आज की रात? I knew I had to study today. मुझे पता था आज मुझे बहुत पढ़ाई I करनी knew है, something was coming tonight. मुझे पता था आज की रात कुछ होने वाली है। So now Prabhupada continues. तो प्रभुपाद आगे बताते हैं, Right? This is qualification to be a guru. तो ये योग्यताएं हैं गुरु होने की। Unless you approach a person who is a representative of Krishna and a tattvadarshi. तो जब तक आप ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं जो कृष्ण का प्रतिनिधि है और तत्वदर्शी है, Is it someone with a theoretical understanding of tattva? Is that tattvadarshi? तो अगर कोई मौखिक रूप से कृष्ण का ज्ञान दे रहा है तो क्या वो तत्वदर्शी है? Tattvadarshi means tattva vigyanam. तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व विज्ञान। Without the mercy of Krishna, Krishna Parampara, Shastra, how are you going to get tattva vigyanam? Where are you going to get tattva vigyanam? तो कृष्ण कृष्ण परंपरा और शास्त्र की कृपा के बिना आपको तत्व विज्ञानम कहाँ से मिलने वाला है? So Prabhupada, Krishna himself is saying who is the guru, कृष्ण स्वयं बताएंगे गुरु कौन है, who you should surrender to, किसको आपको शरणागत who you करना should चाहिए, hear from, who किससे you should आपको serve, श्रवण करना चाहिए, and किसको who you आपकी सेवा should करनी inquire चाहिए, from. Krishna himself is saying what is the qualification. और किनसे आपको जिज्ञासा करनी चाहिए। कृष्ण स्वयं बता रहे हैं क्या He योग्यताएं होनी must चाहिए be उनके अंदर। tattvadarshi, अवश्य उनको तत्वदर्शी होना होगा, who has seen the truth जिसने तत्व को दर्शन किया है and is full of knowledge. और पूर्ण ज्ञान है उनको। How are you going to know who has seen the truth and full of knowledge? आपको कैसे पता चलेगा जिसने तत्व को दर्शन किया है और पूर्ण ज्ञान है Right? That उनको? was one of my first questions to Srila Govinda Swami. I'm a conditioned soul. I'm just beginning in spiritual life. और ये मेरा पहला प्रश्न भी था श्रील गौर गोविंद साहब महाराज से कि मैं हम बद्ध जीव हैं, Everyone's अपने आध्यात्मिक quoting जीवन की शुरुआत Shastra, कर रहे हैं। Krishna, Krishna, Krishna. Right? How do you know? Is this, he's telling leelas and pastimes, right? How do you know if this person is practically part of that leela? That was my question. तो सभी लोग शास्त्र की बातें कह रहे हैं, कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा की लीलाएं बता रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति कृष्णा की लीलाओं का भाग है या केवल मौखिक तरीके How से can बता a रहा है? conditioned soul know? Is this person practically part of that leela? Or is it just theoretical? कैसे कोई बद्ध जीव ये समझ पाएगा कि ये व्यक्ति असल में उस लीला Is के it भाग है real या or is केवल it मुंह से unreal? बता रहे हैं, ये असली है या नकली है? Because it all sounds absolute, क्योंकि right? सुनने में सब एक जैसा लगता So है। how does a conditioned soul know the difference तो बद्ध जीव को अंतर कैसे between पता what's चलेगा? real and unreal? क्या असली है क्या नकली? What's truth and what's untrue? क्या सत्य है क्या असत्य? What's realized and what's theoretical? क्या साक्षात्कार प्राप्त ज्ञान है और क्या So मौखिक ज्ञान Gurudev है? said it cannot be तो मेरे theoretical. गुरुदेव ने बताया मौखिक It will ज्ञान not नहीं होगा, work. वो काम ही नहीं कर पाएगा। So there'll be no effect of hearing from तो them. उनसे श्रवण करके कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। So you judge by the results or the effect of
proper hearing from proper source. तो आप प्रभाव से और फलों से देख सकते हैं अगर आप सही स्रोत से सही तरीके से अपने श्रवण किया And है या unless नहीं। one is empowered by Mahaprabhu's parampara, तो अगर किसी को महाप्रभु की परंपरा से सशक्तिकरण ना it'll मिले be like blank fire. तो ये खाली बंदूक की तरह होगी, No bullet. कोई गोली नहीं होगी उसमें। Big entourage, big lights, big sound system, big everything, right? And then it's like, okay, like smoke, fire, movement, right? No bullet. कि बड़ा अंतराज, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी आवाज़ होगी, बहुत सारी रोशनियाँ होगी, लेकिन खाली बंदूक होगी, बस उसमें गोली नहीं होगी, बस आवाज़ आएगी। So it's just a theoretical, तो ये मौखिक है, sentimental, भावुकता वाला artificial. और बनावटी तरीके का। It's cheating actually. ये ठगना एक तरह का। Because those jnanis, my Gurudev used to say, they're the greatest cheaters. क्योंकि मेरे गुरुदेव बताते हैं वो ज्ञानी सबसे बड़े ठग हैं। Because they're running after name and fame, adoration, distinction. क्योंकि वो यश, मान, प्रशंसा और प्रतिष्ठा के पीछे हैं। They want pranam, pranami, वो प्रणाम और प्रणामी चाहते हैं। pratishta, प्रतिष्ठा, jnanis. ये ज्ञानी, That's why they're cheaters. और इसीलिए वो ठग हैं। So if you're cheating, if you're coming in that way, Krishna's going to reveal, you're going to become a tattvadarshi. तो आप ठग रहे हैं और इस भाव से आ रहे हैं, तो क्या आप तत्वदर्शी बन पाएंगे? कृष्ण आपको You're going to प्रकाशित get करेंगे। divine eyes and ears by which to hear and see Krishna. आपको दिव्य नेत्र या दिव्य इंद्रिय मिलेंगे जिससे आप कृष्ण को देख और सुन पाएंगे। Unless you approach a person who is a true representative of Krishna and a tattvadarshi who has seen the truth तो जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जो असल कृष्ण का प्रतिनिधि है और तत्वदर्शी है, जिसने and who तत्व is का दर्शन full of किया है knowledge, और जो पूर्ण है ज्ञान में, from him you can understand what is Bhagavad Gita, केवल उनसे ही आप समझ सकते हैं कि भगवद गीता क्या है, what is Bhagavan. भगवान क्या है। Otherwise, इसके अलावा you cannot understand. आप समझ नहीं पाएंगे। Naham prakasha savasha yogamaya samanvrita, samavrita, Krishna says. I am never manifested to such foolish, unintelligent people. कृष्ण कहते हैं ऐसे मूर्ख और कम बुद्धिमान लोगों के सामने मैं कभी स्वयं को प्रकाशित नहीं करता।